Great. The next step जो हम करने जा रहे हैं वो order है. This is probably really मेरे ख्याल में ये जो आपकी क्लास है उसके अंदर जो आपके 2-3 interesting concepts हैं जो मुझे काफ़ी interesting लगते हैं उसमें से एक है. So let's pay some attention to this. Okay. जब आप अपनी मैथ की लाइफ स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में मैथ की लाइफ आपकी स्टार्ट होती है by writing these figures 1 2 3 4 5 6 and your parents or your teachers or whoever is in charge of your life makes you write these numbers for I don't know how long of your dreaded life. Okay. The thing is, if you, when you were doing this, if you were to write, instead of writing it like this, if you were to write it like this, so people would hate you, right? People would like, okay, no, you're doing it wrong. You need to do it the way I told you, like this. Okay. Similarly, जो आपकी नॉन मैथमेटिकल लाइफ है उसकी बिगिनिंग शायद इन वर्ड्स के साथ होती है, राइट? और यहाँ पे भी if you were to write B, D, C, A and E, people won't like it, right? People will say, no, this is not the way you write it down. But the thing is, there is a fundamental reason why should you write it like this. ये वाला जो part है इसको ऐसे लिखने के की एक reason है. इसको ऐसे लिखने की मेरे ख्याल में उतनी fundamental reason नहीं है. Why should A come before B is not fundamentally well defined. Okay. The concept I am trying to convey here is the order. Okay. The thing is, 1 comes before 2 and 2 comes before 3. In the numerical digits, और जब हमने कहा था कि these are actually natural numbers, तो हमने ये कहा था कि these are actually sets, है ना? 0, 1, 2, 3. Actually non-zero natural numbers ले लेते हैं. Okay. तो हमने ये कहा था कि this is a set. और जब हमने set को define किया था तो हमने ये कहा था कि there is absolutely no order in the sets. We don't care कि आप 1 पहले लिख रहे हो या 2 पहले लिख रहे हो या 3 पहले लिख रहे हो. Okay. जब आप इसको as a set लिख रहे हो तो फिर there is no order, right? लेकिन हम लिखते हैं हमेशा ऐसे ही हैं. हम हमेशा 1 पहले लिखते हैं, 2 बाद में लिखते हैं, 3 बाद में लिखते हैं, right? Which means कि there is slightly more to it than just a set. Okay, it's not just a set. There is an implied order on this set. All right. And the order के बारे में हम ये कहते हैं कि so there are two things. इस जो भी जब हम इसको 1 2 3 लिख रहे हैं, there are two things. There is a set, which is the set of the natural numbers, and there is this order. The order is defined as this symbol, which is less than. Okay, हम ये कहते हैं कि 1 is less than 2. Okay, which implies that 1 should come before 2. Similarly, we say that 2 is less than 3. Okay, which means that 2 come before 3. Okay, हम usually इसको लिखते नहीं हैं 1 is less than equal to 3, but ये जब दो चीजें हम लिख लेते हैं तो हम इससे imply करते हैं कि 2 is less than 3. Okay, so the conclusion I want to draw from here is कि ये जो चीज आपने बचपन में लिखी थी, it's not just a set. It is a set, but it's also a relation. Okay, it contains a set, and उस set के ऊपर आपने एक relation define किया, and that relation is of less than or less than equal to. Okay, so this pair is what you learn in the beginning of your school life. You start with the set, and then you are also defining an implicit relation on the set. Okay, let's look at this relation. What sort of relation is this? The first thing I want to say is that this relation is transitive. Okay,
because we do this. Okay, ये हम imply करते हैं कि if 1 is less than 9 and 9 is less than 18, we don't need to compare 1 and 8. Okay, this से हम imply करते हैं कि 1 is less than 18. Okay, so this relation is transitive relationship. The second thing we want to say is that this relation is anti-symmetric. Okay, this relation is anti-symmetric because if A is less than B, then this implies that B is not less than A. Okay? Whenever A is not equal to B, right? Right. And the third thing is about reflexivity. रिफ्लेक्सिविटी का सीन ये है कि जब हम लेस देन और इक्वल टू कहते हैं तो फिर यस इट्स अ रिफ्लेक्सिव ऑर्डर, और जब हम लेस देन का कहेंगे तो इट्स नॉट, इट्स एन एंटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, डज दिस डिस्कशन मेक एनी सेंस टू यू? सो द थिंग इज कि हमने रिलेशन को यूज करते हुए ऑर्डर को डिफाइन किया है. Okay? और हमने चीज़ों के बीच का जो ऑर्डर है स्पेशली इन द नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम के अंदर है वो हमने डिफाइन किया है. द थिंग इज कि जो काम हम ए बी सी डी के साथ कर रहे थे वो भी यही था. okay? हमने बेसिकली डिफाइन करके लिख दिया कि ए कम्स बिफोर बी, फिर हमने ये कहा कि बी कम्स बिफोर सी, एंड सिंस ए कम्स बिफोर बी एंड बी कम्स बिफोर सी, ए कम्स बिफोर सी एज वेल. ओके, और इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने बनाई डिक्शनरी. You go to a dictionary, so this is the order in which words appear. Okay, and this relation is we observed कि it's transitive. Okay, और फिर हमने ये observe किया कि ये anti-symmetric है. Okay, if A comes before C, तो फिर C does not come before A. Make sense? और जो reflexive की बात है, it depends on how you define it. Okay, if you want to keep A in your dictionary, fine. If you don't want to, it's fine anyway, right? The next thing I want to say is that ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये इन्होंने हमारे लिए ये दो रिलेशन डिफाइन किए. टर्न्स आउट कि दे कैन डिफाइन एक्चुअली अ मच मोर जनरल सेट ऑफ रिलेशंस जिनको हम partially ordered sets कहते हैं. Okay? Partially, you'll see this word a lot on the slides, I guess. Ordered set. Okay? This is actually not a set, this is a relation. We call it partially ordered set because there is a set and there is a relation. और रिलेशन को हम नॉर्मली लेस देन और इक्वल टू के थोड़ा सा इस तरह कर्वी रिलेशन से डिफाइन करते हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव गॉन थ्रू योर लीनियर अलजेब्रा क्लास, बस उसमें आपकी जो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस होती हैं उनके लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं. ओके, सो इट्स आई डोंट नो लेस देन इक्वल टू को मैं थोड़ा सा कर्वी कर लिया. ओके, तो दैट्स द रिलेशन ऑफ दिस थिंग. इसमें हम ये कहते हैं कि 1 is less than equal to 3. We aren't using exactly the less than equal to relation, but जो relation का नाम है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं. Okay? Similarly हम ये लिखते हैं कि A is less than or equal to B. It does not really mean कि A is less than or equal to B. It just means that A comes before B. Okay? A precedes B. Okay? Sir? Yeah. Sir, ये partially ordered sets समझ नहीं आई, एक दफा बता दें क्या? Okay. So any relation which is transitive and it's antisymmetric and it's reflexive, उसको हम partially ordered set कहते हैं because it defines the sort of order on the elements of the set. Okay? जी sir. So that's the definition here. Okay, I'm not we say that it's partial because here's the thing. Let me give you a relation. In the relation is this. तुम्हारे पास let's say A है and A is, इसको मैं reflexive बना देता हूँ. B है, इसको भी reflexive बना देता हूँ. C है, इसको भी reflexive बना देता हूँ. Okay, let's say it just contains these three pairs. Okay, is it transitive? Transitive है ये?
No, sir. Have a more careful look. Why it's not transitive? होगा. Why it's not transitive? If it's not transitive, you should come up with an example, right? Why it's not transitive? It is transitive. It is transitive, right? There is no कोई इस तरह के दो एज हमारे पास नहीं है जहाँ पे थर्ड एज ना हो, राइट? इस तरह की कोई एग्जांपल होनी चाहिए थी ना, अगर इफ इट वाज नॉट ट्रांसिटिव. तो इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं है, व्हिच मींस इट इज ट्रांसिटिव. रिफ्लेक्सिव तो हमने बाय डेफिनेशन इसको रिफ्लेक्सिव बनाया है. इट्स एंटी सिमेट्रिक एज वेल. ओके, कोई कहीं पे सिमेट्री नहीं है, कोई एज है ही नहीं जिसकी सिमेट्री होनी चाहिए थी, तो इट्स स्टिल एंटी सिमेट्रिक. बट थिंग इज, यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों में कोई ऑर्डर नहीं है, राइट? इट डज नॉट रियली डिफाइन एनी ऑर्डर. सो इसलिए हम इसको पार्शियली ऑर्डर्ड कहते हैं. Okay, it may define order between some elements, and it may still not define order between some of the elements. Here is another example. सर हम इसको एंटी सिमेट्रिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि C से C का है कनेक्शन और C से C का भी है, तो दैट अच्छा नहीं, we said that A is not equal to B. हाँ बिल्कुल, गुड. सो हमने ये कहा था कि for two distinct elements, okay, elements x and y, x not equal to y, if x y is there, so this should imply that y x is also there, right? For distinct. Okay, so this is antisymmetric. Let me give you an example. तो हम इसको vacuously true कह सकते हैं. Yeah, it's vacuously true. Yeah. Here's another example. Let me take the elements in Z cross Z. Okay, so this is 0 0. मैं non-negative side ले लेता हूँ. 1 2 3 1 2 3, I don't know, 4. Okay, so this is 1 1. This is 1 2. This is 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3. Okay. So now let this be my set. Okay, so this is my set. और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर एक सवाल था लेकिन. हाँ, sure, go ahead. Sir, you said that this is vacuously antisymmetric. तो फिर ये vacuously symmetric भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. Vacuously symmetric भी है और vacuously antisymmetric भी है. सही. क्या? All right, so this is my set. Okay, this is not my order. Okay, this is my set. और इसके ऊपर मैं अब ऑर्डर ऐसे डिफाइन करता हूँ. रिमेंबर मेरे सेट के ऊपर इस तरह के पेयर्स हैं, ए बी टाइप है और सी डी है. ओके, आई से दैट ए बी इज लेस देन और इक्वल टू सी डी इफ A is less than or equal to C and B is less than or equal to D. Okay, does this define my relation completely? This is my relation. Okay? Let me start asking questions. Is it reflexive? Yeah. Who says no? So देखो, मैं ऐसे करता हूँ कि let's me take 1 1, okay, and let me take 1 1. And the question is, do I have ये वाला less than or equal to relationship or not? Okay, I do, right? Because this is less than this guy, and this guy is less than this guy, right? 1 is less than or equal to 1, and 1 is less than or equal to 1, right? True. The thing is, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ मेरे ख्याल में. आप यहाँ पे 2 ले लो, 1 2 ले लो और यहाँ पे भी 1 2 ले लो, राइट?
So I'm still asking the same question. Is it reflexive? This is one element. So is it reflexive? Do I get a pair? अब यहाँ पे मेरे पास pair क्या होगा? मेरे पास यहाँ पे जो pair होगा वो होगा 1 2 comma 1 2. This would be my pair. Okay, this is a pair, and this is in my relation because by definition A is less than or equal to C and B is less than or equal to D. Okay, इन दोनों को मैंने पहले एलिमेंट को कंपेयर करना है और दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो ये भी फाइन है, ये भी फाइन है, तो आई मस्ट गेट दिस थिंग इन माय रिलेशन. Okay, so this is reflexive. Is it antisymmetric? सर सर ये रिफ्लेक्सिव जो आपने प्रूफ किया है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 2 1 की ज़रूरत नहीं थी, या हमने सिर्फ जो लेस देन इक्वल टू उसको कंसीडर करके इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया? देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि इफ आई पिक एन एलिमेंट, ओके, लेट्स से xy है, ओके, द क्वेश्चन इज इट रिलेटेड टू इटसेल्फ और नॉट? ये क्वेश्चन होता है ना, दिस इज द रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन, राइट? ठीक हो गया. So let me ask this question: is it connected to xy itself or not? It is, right? Because x is less than equal to x and y is less than equal to y, right? All right, so it's reflexive. Is it antisymmetric? Yes. So antisymmetric में हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास again pick a pair A, B and C, D और उसमें ये रिलेशन है, राइट, सी डी, और हम ये कहते हैं इट्स नॉट द सेम पेयर. डज दिस थिंग इम्प्लाई के सी डी लेस देन इक्वल टू ए बी इज नॉट देयर? ओके, ये हम क्वेश्चन पूछते हैं ना. सो अगर ये हमारे पास है पेयर, okay, what does it imply? It implies that A must be less than or equal to C, and it implies that B must be less than or equal to B, right? और अगर अब assume कर लो कि ये भी है, okay, तो फिर what does this imply? हाँ, it implies that C is less than or equal to A, and it implies that D is less than or equal to B, right? But the thing is, ये दोनों एक दूसरे को contradict कर रही हैं. अगर ये दोनों बातें ठीक हैं, A is less than equal to C and C is less than equal to A, so this implies that A must be equal to C, right? अगर A C से छोटा या उसके equal है और C A से छोटा या उसके equal है, तो they must be the same number, and same is true about these two. Okay, this thing implies that B must be equal to D. Okay, and this completes the proof that this is actually antisymmetric. All right, and the third question is it anti-transitive? Oh, sorry, transitive. Yes sir, होगा transitive. Yeah, this is transitive as well. Okay, I'm leaving it for you guys to do. Okay, so this is ये जो हमने अभी define किया है relation. This tells you that this guy is less than equal to this guy. Okay, you have an edge of this type, and you have an edge of this type as well. You have an edge of this type as well. Okay, but let me ask you this question. How about this guy and this guy? इन दोनों के बीच में कोई edge है? So this is 2 3 and this is 3 1. No sir. 2 3 3 1. So first question is this less than or equal to this thing? It's not, because 3 is not less than 1, right? This is wrong. Similarly, is 3 1 less than or equal to 2 3? No. Yeah, it's not, because 3 is not less than 2, right? तो ये दोनों बातें ठीक नहीं है. Okay, ये उससे भी छोटा नहीं है, वो इससे भी छोटा नहीं है. This is a example of a strict partially ordered set. Okay, ये एक सेट है जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं. It's reflexive, it's antisymmetric, it's transitive, but it's not totally ordered in the sense कि सारे pairs के दरमियान order होना ज़रूरी नहीं है. There are pairs which are
to use the definition, incomparable. You can't compare them. Okay? So this is strict partially ordered set. अगर ये होता कि हर पेयर के दरमियान ऑर्डर भी है, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, और हर पेयर के दरमियान a is less than or equal to b और b is less than or equal to a ट्रू है, तो फिर हम इस सेट को टोटली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे और इस रिलेशन को वी विल कॉल इट टोटल ऑर्डर.